opportunity for a resource person to interact with the youth. So, on this note, let me welcome the future of tomorrow, who is the present of today, the youth of today. With a big round of applause, take this or hear this in the virtual world, but with a smile. I, Dr. Anju Chawla, welcome all these 24 participants to the session on etiquette for management graduates. तो etiquette मतलब शिष्टाचार, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स मतलब वो स्नातक जो कि प्रबंधक की डिग्री से पास आउट होते हैं या एंट्री लेते हैं. फ्रेंड्स, है तो मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स, 7, 8, 9, 10 जो भी हैं, पर स्लाइड से ज्यादा मैं कोशिश करूंगी, आई ट्राई माई बेस्ट दैट वी connect with each other via the emotions. Turbulence, एक ऐसा इमोशन आपके दिमाग में जो इस वक्त चल रहा है थैंक्स टू कोविड-19 कि ये क्या हो रहा है. Will the education scenario change? Will the expectation from us change? If yes, then how are we going to adapt to it? What should I choose and how should I prepare myself? यहाँ पर मैं एक स्कोप दे रही हूँ हमारी बातचीत को. आई एम ट्राइंग टू गिव अ कैनवस टू द कॉन्वर्सेशन व्हिच वी विल हैव फॉर कमिंग 30-35 मिनट्स एंड पोस्ट दैट आई विल ओपन द प्लेटफॉर्म फॉर योर क्वेश्चंस. स्कोप है उन बातों को करने का जो कि एज अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट आप सीखते हैं, एज अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट आपसे उम्मीद की जाती है, एज अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट आपको सिखाया जाता है. और इस बात पे भी विचार विमर्श करेंगे. We'll also highlight and brainstorm around कि क्या ये जो एटिकेट है जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट के लिए बनाए आज बात की जा रही है, आर दे रियली वैल्यूएबल? क्योंकि why should I invest my time, effort and money अगर वो एटिकेट मेरे किसी काम के ही नहीं है. तो आप कौन है? आप है वो यूथ जो कि कल हमारे देश का और पूरे विश्व का कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन में भविष्य बनाएंगे. और हम कौन है? We are the people who have lived, few decades of our life, which may be double or maybe triple fold than your life so far. और कुछ सीखा है हमने और आज जो आपसे बात कर रहे हैं. So the scope is, as a management graduate, आपसे क्या उम्मीद की जाती है, आपको क्या सिखाया जाता है और आप इस जर्नी में क्या सीखते हैं और क्या ये वाकई आपके लिए वैल्यूएबल है. So on this note, Professor Soumya, may I request you to move to the next slide, please? Thank you. हर सेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं और इस सेशन के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं. So the 3 objectives which I'll cover in this fast-paced session are: number 1, etiquette क्या चीज है. number 2, ये मैनेजमेंट का जो डिसिप्लिन है वो इतना आइडियल डिसिप्लिन क्यों माना जाता है आज के समय में भी इन एटिकेट को, इस शिष्टाचार को सीखने के लिए. So what is the reason because of which this management discipline till date is considered to be the foremost, the best discipline because of which you learn these etiquettes वो DNA में आ जाते हैं. I mean, as a postgraduate in management कुछ चीजें मेरे DNA में हैं और बहुत सारे मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के DNA में हमें सिखाया नहीं जाता. बार बार हम सीख जाते हैं उस जर्नी में. वो क्या चीजें हैं? और last but not the least, etiquette that transforms a student to a management graduate for prosperity. किसकी prosperity? उस management graduate की prosperity. I hope अभी तक हम प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं. गाड़ी आपकी और मेरी एक ही प्लेटफॉर्म पे दौड़ रही है और आपके मन में कुछ सवाल हैं कि मैनेजमेंट ऐसा क्या जादू है, ऐसा क्या चीज है जो मुझे सिखा देगा, ऐसा क्या है जो मैं सीख लूंगा या लूंगी. Let's proceed. Professor Soumya, click please. Thank you. So, etiquette क्या चीज है? शिष्टाचार जिसको हम हिंदी में कहते हैं. Etiquette सबसे आसान तरीका किसी भी टिपिकल या टेक्निकल टर्म को समझाने का मुझे मेरे मास्टर कोच ने बताया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो मतलब है ना वो समझा दिया जाए. और वो क्या कहता है, मैं भी आपके लिए रीड कर रही हूँ, यू ऑल्सो प्लीज रीड इट फॉर योरसेल्फ, दैट
Oxford Dictionary defines etiquette as the customary code of polite behavior. वो कोड जो कि विनम्र विनम्र स्वभाव के लिए कहाँ पे सोसाइटी और अमंग मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप फॉलो किया जाता है. तो यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोफेशन हो गया मैनेजमेंट. वो लोग कौन है जो इसको फॉलो करेंगे? वो है आप लोग, हम लोग. और ये क्या करता है? ये विनम्रता लाता है. विनम्रता दोस्तों ऐसे ही नहीं आ जाती है. जिसके पास ज्ञान कम होगा ना, उसमें विनम्रता भी कम होगी. रीजन बहुत सिंपल है. जब मुझे पता ही नहीं है कि दुनिया में कितना कुछ भरा पड़ा है, तो मेरा स्वभाव क्या होगा? छीनने का. क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पास उन चीजों से मैं अवगत ही नहीं हूं. तो जो भी चीज मुझे नहीं दिखेगी, मुझे लगेगा छीन लूं. पर अगर मैं चीजों से अवगत हूं, इफ आई एम अवेयर ऑफ व्हाट इज अवेलेबल in the huge ocean of information and knowledge, then I will be humble, I will be polite, and it is only the polite and humble who rise up the ladder. अब CEOs को देखिए, कंपनीज के CEOs को देखिए, स्टार्टअप्स के CEOs को देखिए, आप कुछ कॉमनैलिटी पाएंगे उन सबके बीच में, और वो है ह्यूमिलिटी. किस चीज की? सीखने की. कहां से आई? सीख कर. क्या? मैनेजमेंट के कुछ मंत्र. कितना बढ़िया है ना. क्या सीखा? विनम्रता. कैसे सीखा? मैनेजमेंट से. क्या सीखा मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट में सीखा कि किस तरीके से हम अपने आप को सिर्फ एक स्टूडेंट से मैनेजमेंट ग्रेजुएट में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रोफेसर सौम्या. थैंक यू. जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने इस पूरे सेशन को एक स्कोप दिया है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हिट करती हूँ. हाउ इज मैनेजमेंट एन आइडियल डिसिप्लिन टू लर्न एटिकेट? प्रबंधक एक आइडियल सब्जेक्ट कैसे है शिष्टाचार को सीखने के लिए? एक आदर्श सब्जेक्ट कैसे है शिष्टाचार को सीखने के लिए? तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या क्या सीखता है? लेट अस पे अटेंशन टू दैट. फर्स्ट, हमें सिर्फ ये नहीं सिखाया जाता कि क्या बोलना है, हमें ये भी सिखाया जाता है कि कैसे बोलना है. बच्चा पार्टी एक बात नोट कीजिएगा, आपके मम्मी पापा जब आपको प्यार से और असर्टिव होकर कोई बात बोलते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आता है, आप ज्यादा मानते हैं. अगर वही पेरेंट्स जिन्होंने आपको जन्म दिया है, अगर वो आपसे अग्रेसिव होके कुछ ऊंचे शब्दों का प्रयोग करके, जो कि कई बार करते हैं पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, पर पॉइंट इज कि आप कहाँ ज्यादा समझते हैं. पहली जगह पे wherein your parents are polite, wherein your parents are assertive, wherein your parents have made sure that whatever they are saying, they are talking in a tone that makes most sense to you at that time. And this is what you learn in management. This is what a management graduate learns. Second, and very important, you learn to control your body language and expression. देखिए, शब्द आप शायद छुपा लेंगे, पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को छुपा पाना एक आर्ट है. वो भी मैनेजमेंट में सिखाया जाता है. ये जो पीरियड होता है ना, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन या 3 साल का ग्रेजुएशन, बहुत कठिन जर्नी होती है, बट इट इज अ वर्थ जर्नी to travel, because this is all what you get to learn for your prosperity. You learn how to tackle your body language. Third, बार बार क्या कराया जाता है आपसे? आपको बार बार सिखाया जाता है, आपको प्रैक्टिस कराई जाती है. आप गलतियां करते हैं, उन गलतियों को वेलकम किया जाता है, उन गलतियों में फिर काम किया जाता है. एंड देन यू आर सब्जेक्टेड टू द सेम साइकिल so many times that it becomes habit to perform, habit to start from scratch, habit to research, and that is what makes a management graduate. I hope आप enjoy कर रहे हैं इस बात को कि एक ऐसा भी कोर्स है, एक ऐसी भी जगह है जहां पे हम वो चीजें सीखते हैं जो हमें जिंदगी ठोकरें खिला खिला के सिखाती है. पर ये 3 साल ग्रेजुएशन के या 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के हमें बार बार उन चीजों को सिखाते हैं, तब तक जब तक वो मेरा हैबिट में ना आ जाए. Then, knowledge of workplace environment. किताबें पढ़ना, आप स्टीफन पी रॉबिन्स की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ सकते हैं, आप फ्रेंच एंड बेल की ओडी पढ़ सकते हैं, फिलिप कॉटलर की मार्केटिंग पढ़ सकते हैं. सिर्फ पढ़ने से नहीं, इट इज
also about how the faculty is explaining things to you, how a faculty is making sure that you practice, you maybe through case studies, through role plays, through discussions, through debates, and the faculty makes sure that you are imbibing what you are learning. And that's very important etiquette of a management graduate. भूलिएगा मत, ये जो शिष्टाचार है ये सीखने से ही आ रहा है. अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था of the CEOs, not only of the companies but even of the startups. Humility. अब देखेंगे जिनके पास humility नहीं है, सीखने की इच्छा नहीं है, वो लोग बहुत जल्दी गिरते हैं. They may be a one night stand miracle, but they will fall flat so soon that you will even forget that they ever rose also. Then empathy with professional decorum. Empathy क्या है? रोने वाले के साथ रो दिए, वो मैनेजमेंट ग्रेजुएट से उम्मीद नहीं की जाती. जैसे डॉक्टर से ये उम्मीद नहीं की जाती ना कि जब एक पेशेंट परेशान है तो उसकी परेशानी में डॉक्टर also starts crying. No, same is with management. When the company is undergoing crisis, the management graduate will rise up and he will find out what can be done now. So a management graduate is made to learn, not to be a problem maker, but a problem solver, always solution oriented. This is all what you get to learn. और उसमें आपको मेहनत क्या करनी है? इंटेंशन की मेहनत करनी है कि मैं हूँ वहां पर जहां पर ये सब सिखाया जाता है, क्योंकि यही चीजें हैं जो कल मुझे ऊंचा उठाएंगी, यही चीजें हैं जो कल मुझे एक फंक्शनल एग्जीक्यूटिव से वो मैनेजर बनाएंगी, वो वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे, या कल को मैं अपना ही एक ऑर्गेनाइजेशन खोलूंगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट मैनेजमेंट ग्रेजुएट ऑफ पीपल ओरिएंटेड स्किल्स. एम्पैथी सिखाई जाती है. एम्पैथी का मतलब रोने वाले के साथ रोना नहीं है. एम्पैथी का मतलब है टू पुट योर शूज इनटू द शूज ऑफ द इशू एंड देन फिगर आउट व्हाट कैन बी डन, व्हाट आर माय रिसोर्सेज, एंड दिस ऑल इज मेड टू लर्न. ये सब आपको सिखाया जाता है थ्रू सिमुलेशन. मैं बार बार एक शब्द का, एक फ्रेज का इस्तेमाल कर रही हूँ, that you are made to learn, you are made to learn. You are made to learn. I was made to learn. So were your faculty, and the result is very clear that we know we are well equipped how to fight whatever comes our way. हम लोगों का वो घोड़ों की तरह ब्लिंकर नहीं लगे हुए हैं कि बस घोड़ा जो है उसको सिर्फ आगे ही आगे दिखता है, आसपास क्या बिखरा हुआ है, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट उसको दिखता ही नहीं है. No. We are not with the blinkers. Being management graduates, we are people who see with a 360-degree vision, just like a chameleon maybe, left also, right also, back also, and everywhere. And we try and gather what possibly we can do even in the time of crisis. That is imbibed in us. Then you also get to learn being opinionated. हर बार चुप रह जाना कॉन्फ्लिक्ट को तो हटा सकता है, आपको किसी की बैड बुक्स में आने से भी बचा सकता है, but that will not give you your due place. To have opinion is very important. Does not mean the management will push you to be aggressive, but the management discipline will push you to have knowledge. The management discipline will push you to build on the information which is around and have opinions. Also, the behavioral skills. कितनी ट्रेनिंग्स आप सुनते होंगे, सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स. मैनेजमेंट में ये सब आपको सिखा दिया जाता है कुछ इस तरीके से कि आपको लगता है यू आर बोर्न विद दीस थिंग्स. स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टेक्निक्स टू deal with people, to make your own tools, everything is being taught in the curriculum. And ये शिष्टाचार है जो आप सीख जाते हैं जब आप दुनिया में निकलते हैं. When you face this competitive world, you're so equipped that you don't feel the need to go back to something again, at least for some time. और जैसे ही आप अपनी जिंदगी की सीढ़ी, अगली सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, again some training is given to you, maybe the technical training, maybe the process training. आपको हैरानी होगी, एक बात इनफैक्ट खुशी होगी कि पिछले 10 साल में कितने ऐसे PSUs के एम्प्लॉइज, कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉइज ने एग्जीक्यूटिव MBA ज्वाइन किया है. क्यों? क्योंकि अब उनको लगता है I may have been the best of the engineer, I may have been the best of the doctor, but I need to learn the people management skill, and executive MBA is this thing. So
you are thinking in this direction right now, just imagine the kind of advantage you will have. Professor Soumya, next slide, please. Thank you. एक acronym है APAR. What is this APAR? This is the lifestyle. This is the way that you are taught. This is an important way to be successful, and you are being taught. This is one of the etiquette that a management graduate learns after undergoing the process of management curriculum. What is it? APAR. A here stands for awareness. हाथ रखिए जरा दिल पर और बताइए कितने लोगों ने अपना सेल्फ डायग्नोस्टिक किया है, कितने लोगों ने ये जाना है कि व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर देयर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. मैंने वीकनेस का शब्द इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज मैनेजमेंट डज नॉट टीच अस टू पिन पॉइंट द नेगेटिव्स. द डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट टीचेस अस टू प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव ऑन आवर इम्प्रूवमेंट एरियाज. सो अवेयरनेस दिखाता है, सिखाता है. Then the pitch. What do you mean by pitch? Pitch is the process, or pitch is basically a script that you make for yourself to introduce yourself, to present yourself. And management will teach you 30 seconds elevator pitch. That in 30 seconds, if you have to introduce and make that first impression onto somebody, what can these words be? How can you synthesize these sentences and make that impression? So, APAR, this is what becomes your DNA. Then the second A in APAR is audience. अगर मुझे पता ही ना हो कि मैं अगर ये मुझे पता ही ना हो कि मैं किससे इंटरैक्ट कर रही हूँ, तो सोचिए मेरा जो डिलीवरी है वो कहीं पे भी जा सकता है. I may start talking of neurology. I mean, coming from that background, I may start talking of the brain, coming from the emotional intelligence background. I may also start talking of maybe the humor that I enjoy. But will that make any sense to you? Will you appreciate it? The management discipline also teaches you an etiquette to understand the target audience. That can be your stakeholders, right from the vendors to the job providers, to the peers, to the subordinates. Anyone and everyone is your stakeholder. आप कैसे पहचानते हैं उनको? How do you get that right behavioral skill to deal with people? Because a power is being taught to you, and you actually become so aware of yourself. You have crafted your pitch so well that now, after knowing your target audience, you are in the mode of researching every time. And what is it? What is it I am best at, and what is it that I can get better at? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा बहुत है, और फायदा ये है कि अपार की हम बात कर रहे थे एंड अवेयरनेस की बात समझ में आई कि यू गेट टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स. तो आपको किस पे प्ले करना है, यू गेट टू नो अबाउट इट. पिच की बात कर रहे थे. इट इज द मैनेजमेंट डिसिप्लिन व्हिच टीचेस यू हाउ टू हैव दैट 30 सेकंड्स एलिवेटर पिच. आप किसी के ऊपर भी फर्स्ट इंप्रेशन बना सकते हैं. देखिए, जब तक मुझे नॉलेज ही नहीं है मेरे बारे में, जब तक मुझे पता ही नहीं है कि दुनिया से मैं कनेक्ट किस बेसिस पे हो सकती हूँ या सकता हूँ, where will I get words from? You may have mugged up Norman Lewis, हाँ, लेकिन कैसे बताएंगे अपने बारे में? ये बताता है मैनेजमेंट डिसिप्लिन अपार के लाइफस्टाइल से, क्योंकि आपको आपके ऑडियंस के बारे में जानकारी देता है कि आप कैसे समझे कि आपका ऑडियंस कौन है. बड़े सारे स्टेक होल्डर्स होंगे आपके. आपका जॉब प्रोवाइडर भी आपका स्टेक होल्डर होगा, आपका प्लेसमेंट कमेटी भी आपका स्टेक होल्डर होगा, आपके पीयर, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके वेंडर्स, हर कोई आपका टारगेट ऑडियंस होगा. उनको समझे कैसे, उनको समझे कैसे, ये आपको पता पड़ता है मैनेजमेंट डिसिप्लिन में, जहां पे आपको बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सिखाया जाता है, जहां पे आपको हर वो एटिकेट समझाया जाता है जो भी हमने थोड़ी देर पहले बात की. जो आप सीखते हैं ना, वो आप प्रैक्टिस करते हैं, और आपको 2 साल के बाद छोड़ नहीं दिया जाता या 3 साल के बाद छोड़ नहीं दिया जाता. इन्हीं 3 सालों ऑफ ग्रेजुएशन या 2 साल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन में बताया जाता है that how do you implement it, and the last is research. It comes in your habit so much so that you
always emphasize on what you can do best and what you can do better. और यहाँ पर मैंने बोला था कि let's move to the next slide to know what is it that I can do better. Soumya ji, next slide please. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप एक पॉज लें, एक बहुत मीनिंगफुल पॉज लें. एक ये जो क्वाड्रेंगल है ना, एक इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंगल बोलते हैं या जो भी कुछ बोलते हैं, स्क्वायर तो पक्का नहीं बोल रहे, पॉलीगन, राइट. एक पॉलीगन में ना $1 million वर्ड्स लिखा हुआ है. और ये वो एटिकेट है जो कि सिर्फ एक स्टूडेंट को जो कि 12th पास है या कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है उसको ट्रांसफर कर देते हैं एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट में, किसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, किसके भले के लिए, उसके अपने भले के लिए. सो प्लीज ईच वन ऑफ यू प्लीज be aware of yourself on each of these polygons word. How much are you, what is your score on each of these terms? I will request you to keep marking yourself on a scale of 1 to 5 on each of these words, on each of these terms, 1 being the lowest and 5 being the highest. आपको ये पता पड़ेगा कि कितना स्कोप है आपके पास सीखने का with the management discipline. सबसे पहला अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी क्या है? चीजें बदलती हैं. VUCA is the norm. It has always been the norm. Even COVID-19 which has struck us, ये भी कहीं ना कहीं हम VUCA में उसको absorb कर लेंगे. We will learn to live with it. So adaptability क्या है? Change is the only constant and VUCA, that is volatile, uncertain, complex, ambiguous. ये 4 ऐसी टर्म्स हैं जिनके साथ हम जी रहे हैं, हमेशा से जी रहे हैं. जस्ट दैट कि पिछले कुछ सालों में हम इस शब्द को ज्यादा सुन रहे हैं, इस टर्म को ज्यादा सुन रहे हैं. अडेप्टेबिलिटी क्या कहती है? अडेप्टेबिलिटी कहती है चेंज आया है, उसको एक्नॉलेज करो. आपका मेंटल मेकअप किसी काम को करने का था ABC तरीके से, बट अब B रिसोर्स ही नहीं रहा आपके पास because of maybe some changes in the macro environment or the micro environment. जो भी था रीजन, इस वक्त आपके पास वो B रिसोर्स ही नहीं रहा. क्या करेंगे? छोड़ देंगे आपका? अगर हाँ, तो अडेप्टेबिलिटी आपका 1 है, मे बी 0 है. लेकिन if you gather all your resources, whatever they are, you may still be only on a starting point, on the stepping stone of this process that you wanted to undergo. At least आप हैं ना वहां पे. Adaptability means getting ready for that change and accepting that change, that yes, a change has come. Agility को भी सुनिएगा और अपने आप को 1 to 5 पे रेट करने की कोशिश कीजिएगा, 1 being the lowest, 5 being the highest. Agility कहती है कि मुझे पता तो पड़ गया ये चेंज आ गया है, but how fast can I embrace this change? How fast can I actually work on this change for myself? That is agility. तो adaptability ने कहा कि मैंने accept कर लिया, हाँ ये change आ गया है, अब मैं पास्ट से कोई बैगेज नहीं लेके चलूंगा या चलूंगी. बट agility कहती है एक्शन, कि मैंने acknowledge और accept तो कर लिया, but now I want to take action. That is agility. So mark yourself on a scale of 1 to 5. जहां जहां आप 1, 2, 3 हैं, आप इमेजिन कीजिए जब आप 4 और 5 हो जाएंगे with the help of management discipline, what magic you can bring to yourself and to the world. Third, organization temperature gauging. जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू करते हैं ना, इनिशियली सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. Why? You are being treated as a kid, but there are people who are playing power and politics. You don't even know about it. तो अब आप देखिएगा, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, सीएस हैं, सीएस हैं, इनको वो पावर एंड पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है. एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो सैड होते हैं, वो डिस्गस्टेड फील करते हैं, वो बहुत लो फील करते हैं, बिकॉज दैट पीपल ओरिएंटेशन, दैट गेजिंग ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स इज मिसिंग. लेकिन एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट को वो पावर का हथियार, वो पॉलिटिक्स का हथियार भी समझाया जाता है टू गेज what does a person mean when he says
something reading between the lines. So you can rate yourself on 1 to 5. Moving to being proactive. थप्पड़ पड़ने पर चेहरा हटा लेना या थप्पड़ की तैयारी करना, ये रिएक्टिव होना है. प्रोएक्टिव होना is to be prepared for something when that has not even happened, but आप पैटर्न देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, आज जब लॉयड इंस्टीट्यूट ने ये वेबिनार रखा है, दे डिड नॉट वेट कि अभी जब लॉकडाउन खुलेगा तब देखेंगे क्या करना है. दे वर प्रोएक्टिव. In fact, they have been running their sessions successfully. They have been conducting their exams successfully, right on time, bang on time. They are not waiting for the lockdown to open up. So that is what management thread brings to your fabric, being proactive. Then focused priority. ये term थोड़ा समझने की जरूरत है. हम अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के बेसिस पे अपनी चीजों को फिक्स तो कर लेते हैं. अच्छा, ये अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, इसको अभी करना है. ठीक है, ये अर्जेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी अभी करना है. ये अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब थोड़ी देर बात करेंगे, या जैसे भी जो भी आपकी प्रायोरिटी होती है. बट अब ये देखिए कि कितनी बार आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते. रीजन, आपने प्रायोरिटी तो सेट की थी पर उस प्रायोरिटी की रैंकिंग नहीं कर पाया. आपने प्रायोरिटी तो सेट की थी बट वो प्रायोरिटी की रैंकिंग नहीं कर पाए. सो फॉर एग्जाम्पल, आपको सेशन डिलीवर करना है, आपको अपने घर का काम करना है, आपको कुछ बहुत चीजें बाहर का भी देखना है. सो प्रायोरिटी तो आपने सेट कर ली, लेकिन लैपटॉप को पहले चार्ज नहीं किया, थिंकिंग व्हेनेवर आई विल गो फॉर द सेशन डिलीवरी आई विल चार्ज इट. हुआ क्या? जैसे ही बैठे सेशन डिलीवर करने के लिए, लाइट वेंट. Now light went and there is no inverter at your place. What happened? आपने प्रायोरिटाइज तो किया था काम को, बट आपने फोकस नहीं दिया था उस प्रायोरिटी को. You should have charged your laptop way before, so that अगर पावर चला भी जाता, you could have still be going on with the task that was assigned to you, that is delivering a session. Then people techno. As a management graduate, you not only get to learn the operations part, the supply chain, the IT, the marketing, the finance, the international business, the event part, but you also get to understand the technology, because IT also has become an integral part of the whole management now. So many things are being handled by artificial intelligence, and a management graduate is well versed with those technologies. So this is a new norm that one has to get adapted to. Very, 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 very high agility needed. So you see what I'm talking, जो मैं आपको बोल रही हूँ, वो एक कहानी नहीं है, आज की सच्चाई है. Last but not the least, holistic development. ये सब कुछ होते 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 क्या हुआ? मान लीजिए आपका नाम आरती है, आकाश है, जो भी है आपका नाम, वो आरती, वो आकाश holistically develop हो गया. Because now this Aarti, this Akash can see a 360-degree view of the resources of the ecosystem that is around him or her. So I am sure you must have rated yourself on a scale of 1 to 5. Hold it, because this rating will tell you what is your scope to do magic, what is your scope to learn from management discipline, and how can you bring magic in this world by upgrading yourself, by transcending yourself and learning the etiquette of a management graduate. Next slide, please, Professor Soumya. Thank you. So this will be the last slide, but this is a very, very important slide. COVID-19 is an unprecedented situation that we all are facing. एक ऐसा situation जो हम में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी. याद कीजिए वो शुरुआत के दिन, वो 18, 19, 20 मार्च, जब आपको एहसास होने लगा कि उफ, कुछ तो होने वाला है गड़बड़. हाँ, जैसे वो CID में बोलते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है, तो वो कुछ तो गड़बड़ है होने लगा, पता लगने लगा. बट मोस्ट ऑफ अस वेंट इनटू द डिनायल मोड कि नहीं यार, ठीक हो जाएगा, यू नो, इंडिया है, सब चलता है, सब एडजस्ट हो जाएगा. बट ग्रेजुअली वी ऑल रियलाइज्ड we'll have to accept so many things, that mask, that work from home, that study from home, and that cleanliness, that social distancing. We'll have to get used to of it as a management graduate.
certain etiquettes also took a twist. ऐसा नहीं है कि they were not present, but at least आपके पास उस वक्त option था whether you wanted to upgrade yourself or not. But COVID-19 has washed away all that option for all of us, not just you or me, for all of us. हम सबको अपनी comfort zone को push करना पड़ेगा, हम सबको अपनी comfort zone का aura बढ़ाना पड़ेगा, दायरा बढ़ाना पड़ेगा. उसके लिए मैनेजमेंट ग्रेजुएट के पास क्या चीजें हैं जो उसको न्यू नॉर्मल एक्सेप्ट करना पड़ेगा पोस्ट कोविड-19. These are the things. So friends, please read this along with me as I am reading it, क्योंकि जब आप खुद से comprehend करते हैं तो आपका brain ज्यादा समझता है. जब आप खुद अपने आंखों से उसको पढ़ेंगे, अपने मुंह से बोलेंगे और brain में ये visual और auditory modality से learning जाएगा, comprehension high होगा. तो पहली चीज, more digital world with higher artificial intelligence leading to restructuring of leadership. ये leadership की बात क्यों आई यहाँ पे? क्योंकि ultimately management leaders बनाता है. Management is the mother of growing leaders. Is there a difference between a manager and a leader? Yes, we can talk about it at length. लेकिन leader बनाने के लिए हमें चीजों को मैनेज करना आना चाहिए. जरूरी नहीं है कि मेरे पास एक हाईएस्ट डिग्री का वो स्टैम्प हो तभी मैं एक लीडर हूँ. लीडरशिप कुछ इनेट भी होती है, बट many of the etiquette, many of the parts of the etiquette is being taught to you in the management discipline. तो ये लीडरशिप में क्या क्या चेंजेस आएंगे, this will become an integral part. बहुत जल्दी I am sure many of the institutes will introduce a course, new norm post COVID-19 for management graduates, and it will have a lot of changes. So I was just discussing it with Professor Soumya a little back कि accounts में कुछ changes आएंगे, and she asserted me that yes, changes आएंगे. In fact, अभी जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें कुछ चीजों के बारे में बताया तो TDS फॉर एग्जांपल बताया कि TDS जो है वो अब 75% फ्रॉम द फ्रीलांसर्स डिडक्ट किया जाएगा, नॉट दी 100%. तो ये भी तो चेंजेस हैं. हु इज ब्रिंगिंग दीज चेंजेस? People like you and me, people who have done certain things in managing the gambit. सिर्फ अगर मेरा ध्यान ऑपरेशंस में ही है या मेरा सिर्फ ध्यान अगर मैन्युफैक्चरिंग में ही है, then perhaps my mind will not be as developed as it will be needed now. Next, instead of a hierarchy, flexible networks are already appearing that essentially works on cross-functional project. कुछ दिन पहले मैंने एक टर्म सीखी, प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक. आई वॉज वेरी इंट्रिग्ड विद द टर्म कि प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक का क्या मतलब है. इट मेंट कि भैया ट्रेनर हैं या लीडर हैं या जो भी हैं, अब ये मत सोचिए कि आप सिर्फ फेस टू फेस बात करेंगे. अब बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्चुअल इंटरेक्शन ऑल्सो एंड बी इक्वली कंफर्टेबल. पर ये पता है माइंडसेट कब बनता है? जब हमें कुछ इंजेक्ट किया गया होता है. आज भी बहुत सारे लोगों के लिए ये चेंजेस को ला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर आपको ये अडेप्टेबिलिटी, ये एजिलिटी, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के इंजेक्शंस बार-बार कंटिन्यूअसली दिए जाते रहेंगे in the management discipline, you will not find it difficult. You will rather take it as a challenge and you will see it as an opportunity. Leadership skill will be required at every level. तो अब आप कुछ भी हैं, आप चाहे डॉक्टर हैं, सीए हैं, सीएस हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, you will have to be a leader. पहले फिर भी चॉइस था, आज वो चॉइस नहीं रहा. You will have to be a leader क्योंकि चेंज न सिर्फ कांस्टेंट रह गया है, चेंज बहुत ही अब्रप्ट भी हो गया है. Then this can be done. The role of leader will be able to make sense of the environment, mobilize collective intelligence of the team to anticipate problems and solve them and learn from successes and failure. तो ये कौन सिखा सकता है? ये तब सीख सकते हैं आप जब आप एनवायरनमेंट को स्कैन करना जानते हैं. आप ये जानते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या है जो मुझे सपोर्ट कर सकता है, एनवायरनमेंट में क्या है जो मुझे परेशानी दे सकता है. लेट मी डील विद द परेशानी वाला एलिमेंट एंड लेट मी टेक हेल्प ऑफ द सपोर्ट वाला एलिमेंट. सिमिलरली अगर लीडर खुद सेल्फ अवेयर नहीं होगा तो वो इतने बड़े डोज ऑफ चेंज को
डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो खुद ही डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे अपनी टीम को वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स देगा, कैसे टीम को बताएगा कि हाउ टू improve on the strengths that you already have, which is very much needed. Who tells you this? When you have the concepts of management clear in your head. आप सोच रहे होंगे कि हम उम्मीद कर रहे थे हमें लिसनिंग एबिलिटी पे कुछ सुनने को मिलेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कुछ सुनने को मिलेगा. ये बहुत छोटी चीजें रह गई हैं. मैनेजमेंट ग्रेजुएट का एटिकेट कहता है लर्न अ लॉट एंड लर्न ऑलवेज 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 बी अ लर्नर. I am a learner, so are your faculty members. They will be learner throughout their lives, and I can assure you that. And that is yet another new norm for anyone and every one of us. So this also is very clearly and lovingly talked about in the stream of management. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके साथ मैं रैप अप करूंगी सेशन को, एंड आई विल कीप द क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन, कि कैसे मुझे सिर्फ अपने बारे में ही नहीं पता करना. एज अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट, my corporate, my takers will expect me to be a problem solver always. How? मुझे अगर मेरे टेम्पर के बारे में नहीं पता, मुझे अगर यही नहीं पता कि मुझे क्या आता है, या फॉर एग्जाम्पल मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू मॉनिटर 50 IT people, but I do not know the technological stack of that IT. How am I going to monitor it? ये कहाँ से कैसे सीखेंगे? और ये सिर्फ मॉनिटरिंग ऑफ द टेक्नोलॉजिकल स्टैक की बात नहीं है. There will be 15 people who will come to you every day telling that ये इसकी गलती है, ये उसकी गलती है. How you deal with it? Because you cannot throw away everyone. आप हर एक को ले ऑफ नहीं कर सकते हैं ना, और सारा काम आप खुद भी नहीं कर सकते. So ये people management skill कैसे आएगा? This is one of the very very important etiquette that you learn in the APAR lifestyle of being a management graduate. समराइज कर रही हूँ कुछ चीजों को. पहला, मैनेजमेंट ग्रेजुएट से क्या उम्मीद की जाती है और वो क्या क्या चीजें सीखता है, इनकी बात की गई इन 42 मिनट्स में. फिर बात की गई कि क्या कोई लाइफस्टाइल है जो आपको सिखाया जाता है. हाँ, अपार, जिसमें यू आर मेड अवेयर ऑफ योरसेल्फ, यू आर बीइंग टॉट हाउ यू कैन पिच टू योर ऑडियंस by knowing your audience and by researching your strengths every time. See, as we are growing, as we are moving up the ladder of our age, we are changing. And it is very important for each one of us to realize that it is not only I or you who is changing, the environment is changing altogether. And as a management graduate, scanning of the environment becomes important. On this note, Professor Soumya, I'll request you to push the last slide. Thank you. And here, so Neetu ji, I think I'm on time to take the questions. 3:43 it is. Perfect, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Wonderful, ma'am, the session was. And especially you are bringing in COVID-19 and telling us how this time could be used for an opportunity builder for self-building was really very nice and encouraging. So with this, I think we'll close the session and we are open for questions. The first question, absolutely. So the first question that was posed by Subha has been a very active student in all our webinars. He posted a question, ma'am, saying that how do we practice or how do we develop skills for real life problem solving, or how to get ready for the industry? How do we develop our skills so that we are industry prepared in terms of our etiquettes? Absolutely. So Subha, indeed I would say a very useful question you have asked in the interest of your friends also. Well, there are two ways to learn. One is getting hands-on experience and another is preparing it offline. So I'll give you both the ways. If you have to prepare offline, there are multiple books written on the real cases, and then you can brainstorm after reading those cases. You can research around them and then come up with the solutions. Maybe you can have a mentor there to discuss your solutions and find out if your solutions are meaningful also or not. At the same time, you will have to be updated with the policies around in the environment, with the rules and regulations. Now that
gives you this hands-on experience automatically. This is what I have been sharing throughout the session, that management discipline एक ऐसा discipline है, सुबह, right? सुबह, so management discipline एक ऐसा discipline है सुबह, जहां पर आपको सिखाया जाता है, आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है, आपको गलतियां करने को कहा जाता है, उन गलतियों को फिर improve करवाया जाता है, फिर से सिखाया जाता है, समझाया जाता है, and the cycle is repeated. So you become ready for the corporate way before you are actually entering the corporate. I hope I have answered your question, Subha. So Neetu ji, with your permission, Yes. can we move to the second question? Sure, ma'am. Very well answered, ma'am. We move on to the next question, ma'am. This is from Yash Nandan Singh. Now, he's Okay. again a very, very active question seeker in our webinars, and has also been titled the Chanakya of one of the sessions because of his good questions. So I'll now talk about, thank you. So I'll talk about his question. He says, this is one question that students generally ask, that how is a leader and a manager different? A leader leads a team and a manager manages the work. So how are the skills different from each other? Okay. We talk about etiquettes. Etiquettes, Right. if we talk about these skills of Absolutely. Yeah, ma'am. Okay. So I'll give you an example. Because I am more of a storyteller than giving you those cliche definitions. How many of, Yash, do you remember जब Tesla ने अपना एक नया truck launch किया, and I am forgetting the name, Elon Musk, yes. So Tesla ने जब अपना नया truck launch किया, Elon Musk was right there in front of the video, and इतने सारे cameras थे around him, and he claimed that none of the bit of the glass will break whatever you throw at it. And he did showcase, he demonstrated by throwing something on the window pane, and it shattered. Imagine Elon Musk claiming this vehicle from Tesla is unbreakable. Videos, cameras, people watching throughout the globe. And when he threw that stone, what happened? The window pane got shattered. A manager would ideally scold his people. Hey, how was that possible? You told me it was written, the SOPs are clear, you have claimed everything is in place. How did that happen? And a leader will say, never mind, you did your best, but now let's put our heads together and find out that what went wrong. And not just this, he will also take this responsibility on his shoulders, because he was the leader. It was him who is the face of the complete team. That's the difference between a manager and a leader in terms of etiquette. अब अगर आप क्लिशे डेफिनेशन की बात करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है भाई, मैनेजर को एक टाइटल दिया जाता है, लीडर को टाइटल नहीं दिया जाता. हर मैनेजर लीडर हो ये जरूरी नहीं है, पर होना चाहिए. हर लीडर मैनेजर हो ये भी जरूरी नहीं है, पर ना भी होते हुए लीडर टीम को मैनेज कर लेता है. So I hope I have been of a little use to your question, Yash, the Chanakya of one of the session. Thank you, Yash. Right. Thank you, Yes. ma'am. Thank you. Thank you. So we do not have any other questions posed on the messages. Does anybody else would like to ask a question from ma'am? Any takers for the last question of the day? Else I would take the question. Students, if you would like to pose a question, just unmute your mic and you can ask. Anybody who would like to ask, the session is open, please. Okay. इतनी डरावनी तो नहीं हूँ. Friends, मैं इतनी scary तो नहीं हूँ. Please ask questions. I think you were very clear with whatever you approached. So, thank you. Ma'am, okay. So then that gives me a treat. I get to ask the last question of the webinar. Please. Yeah, please. Ma'am, it is said that people who have good etiquettes are people who can handle the worst, the best.
the people, obviously when we work in the teams, we are supposed to meet with all kind of people, whether it is in the house, whether it is outside, whether the student circle, outside student. So it's college, it's house, it's social parties, etc. So how, in spite of having some people who are not very accommodative or हमसे नहीं comfortable हो पाते, how do we manage those people? Because being able to be good to somebody whom you're not liking, in a sense, not that hatred, but yes, you do not place them in the same site of goodness as others. How do you manage yourself? This people management, how do we do to be positive in spite of having some negative people around you? Fantastic question, and I'll tell you something, Neetu ji. Surprisingly क्या होता है कि most of the जो coaching cases मेरे पास आते हैं from the corporate in terms of not feeling comfortable in the work environment, ये इसी के around आते हैं, you know. Ultimately dig in करने पे पता पड़ता है that the subordinate is not very comfortable with the boss, or is not very comfortable with the peer, and that is the reason he is not enjoying that environment, and that is the reason he is not able to use his potential to the fullest. तो मैं paraphrase करती हूँ, if you allow me, I'll paraphrase the question. Yes. So please, the question. So the question succinctly goes like, how do I manage people to get the work done even when I don't like them? Exactly, ma'am. Right? Right, so, ma'am. Thank you. देखिए, एक टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से, क्योंकि आई बिलोंग टू दैट एरिया, तो जहां पे भी कुछ भी बात आएगी, मैं घूम फिर के उसको इमोशंस पे ही ले आऊंगी, बिकॉज आज आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रही हूँ, बच्चे भी बात कर रहे हैं, हम सबका कुछ ना कुछ इमोशन है यहाँ होने का. मेरा ग्रेटिट्यूड है, आपका गिविंग है, उनका क्यूरियोसिटी है, दैट इज व्हाई 3 of us are here, 3 of the parties are here. अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये लोग जो मुझे पसंद नहीं है, हाउ डू आई मैनेज देम? Very, very, very simple. Ask yourself, इन लोगों से आपने काम क्या कराना है, और क्या वो काम आप करा पाएंगे अगर आपका बिहेवियर इन लोगों के साथ ठीक नहीं होगा? That is the first question to ask yourself, because as a management graduate, one etiquette that you should learn in today's time is to be a self coach. And self coach का मतलब है questions पूछना. Ask yourself that, okay, I don't like Hari in my organization, who is, let's say, an accountant, but I have to get my work done from him. So is it possible that I can get my work done from him if I keep showing, if I keep making faces in front of him, or if I keep passing remarks, or if I start bringing out those mistakes? ये ना छोटे दिमाग का काम है, क्योंकि इससे मुसीबतें ज्यादा आती हैं, काम में स्मूथनेस कम हो जाती है. तो थोड़ा सा दिमाग बड़ा करते हैं, कुछ नया करते हैं. And that is, look at the end result that you want from this person. इस interaction से end result क्या चाहिए? क्या वो end result आपको इस behavior से मिलेगा? अगर मिलेगा तो continue, but be prepared for all the for all the consequences. But अगर आपको दिख रहा है कि वो end result मुझे नहीं मिलेगा मेरे इस behavior से, then mold it. और mold करने का एक आसान तरीका, हर बात दिल से बोली जाए, महसूस करके बोली जाए जरूरी नहीं है. It can just be a lip service. Okay, Hari, thank you so much for this work. And हो सकता है मैं हरी थोड़ी देर के बाद दोबारा आपके पास आऊं. And then you are getting back to your office, getting back to your cabin and saying, thanks God, at least आज का काम तो हो गया, कल का कल देखा जाएगा. And gradually क्या होगा कि it will again become your habit. क्योंकि neurons है हमारे यहाँ पे. न्यूरॉन्स है जो कि अगर आप कोई नेगेटिव मैसेज पास करते हैं तो वो पूरा पाथवे बना रहे हैं मेरे ब्रेन में. उसको ब्रेक कर दीजिए और बोलिए that it is not Hari who I have to spend my life with. Hari is there only to interact for such and such and such thing, and that's the end result I am looking. So नीतू जी, कहानी थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन end result को देखिए, अपने present behavior को देखिए, then compare. Is your present behavior does the present behavior have any potential to get that end result for you? If yes, continue. But if no, then change. And that's where adaptability and agility will come in practice. Wonderful, ma'am. Right, ma'am. And sorry, we'll just accommodate one last question from Rajshri. Need not be sorry. Okay. Right.
Because Yash, we've already answered one question, so we'll take you personally on the mail. So Rachri's question is last. It says, how to develop convincing power in a personality? Okay. Well, I can convince you only if I have the knowledge of what I'm trying to convince you and why I'm trying to convince you. I can convince you only if I have the knowledge about what is it that I want to convince you about and why do I want to convince you. The moment I know my why, like Simon Sinek said, always know the why before you start with something. अगर मुझे पता है कि मुझे आपसे कोई काम कराना है, वो काम क्यों कराना है और वो क्या इंफॉर्मेशन है या वो क्या चीज है जिस पे मुझे आपको कन्विंस करना है. ये तो हो गई बात कि मैं कन्विंस कैसे करूं. अब टोन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर आपको किसी को कन्विंस करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट टोनैलिटी इन योर वॉइस. डू नॉट बी लाइक अ बेगर, डू नॉट बी लाइक रावण, but there is a middle way which we call as being assertive. Assertive होने का भी level होता है. You cannot be highly assertive. At times you will have to give space to the other person. आपने उसको अपनी बात बोली, वो उस वक्त नहीं कन्विंस हुआ. Give him time, let him absorb it. हो सकता है on the face of it बिल्कुल मना कर दिया गया हो किसी बात को. Give him time to absorb. Again get back to the person after कैलिब्रेटिंग कि अभी वो थोड़ा रेडी है बात को सुनने के लिए. आप करते हैं ना, अपने मम्मी पापा के साथ करते हैं, भाई बहन के साथ करते हैं. सो that's one skill that you learn. Otherwise also calibrate and then again come back to that person. Ask, क्या सोचा है इस बारे में? हाँ, can we do something about it? That's convincing. पुश नहीं करना किसी को, कन्विंस करना है. Right, ma'am. I think we are so grateful, Anju ma'am, for your heartfelt and such convincing and strategic answers that you have been able to give us for a phenomena which is called soft skills. So we are very grateful that you could be with us on this session and on this platform today. Entirely my pleasure. And maybe get to hear from you in times to come again. Absolutely, with all the pleasure. Right. Thank you, ma'am. Thank you. Just to announce, we always announce our best questions called the Chanakyas of the last session that we had. It was on management disciplines, and we have 4 winners this time. That is Vanshika, Mani, Dipali, and Yash Nandan again. I repeat, Vanshika, Mani, Dipali, and Yash Nandan again. Thank you for having asked such wise questions, and we will be announcing the best questions in the next session. Our next session is going to move from soft skills to analytical skills. This session is on business analytics, the new wave. We'll have a quiz in the next session. So students, whoever like analytics, just get prepared with basic questions on analytics, and there is the best answer prize as well. So with this, I think we would not take more of anybody's time. It's evening time and we'll all want to rest now. Thank you all for being on this session, and hope to see you again. Same time, same, that's the next Monday. Thank you, Dr. Anju. Thank you, Dr. So.